Now, good morning, students. Now, in last lecture, we have completed chapter number 4. Now, from today, we start our next chapter, that is chapter number 5, Accounting, Equations and Business Transaction. So, this is our new chapter. Now, what is this? What is accounting equation and what is business transaction? But before this, we do some revision. Now, till now, what we have seen? We have seen business transaction meaning, then types of transaction, economic and non-economic, then cash and credit. Then we have learned types of accounts, then rules of accounts, and from these types of accounts and rules of accounts, we have prepared journal entries. Now, here what is the motto? Why we prepare accounts? What is the motto behind to prepare accounts? That we have to know. So, in your textbook, page number 109, you have to open page number 109. Now, what is given? So, the significant objective of financial accounting is to prepare financial accounts. Now, what is the main motto to prepare accounts? To prepare financial accounts. Now, under these accounts, which accounts are there? Which accounts we have to prepare? So, here, trading account, profit and loss account, and balance sheet. So here, when we prepare final accounts, we have to prepare three things: 2 accounts and 1 statement. Which 2 accounts? Trading account and profit and loss account, and 1 statement, that is balance sheet. Now, why we prepare trading account? So that we know, to know the gross profit and gross loss of the businessman prepare trading account. And why profit and loss account is prepared? So to know net profit and net loss, businessman prepare profit and loss account. And third one, that is balance sheet. Why balance sheet is prepared? So balance sheet is prepared to know financial condition of the business, or you can say economic condition of the business. Clear? Now, the profit and loss account is also known as a income statement. Profit and loss account is also known as what? Income statement. You have to remember this. And sometimes it is also said financial statements. Instead of final accounts, what we say? Financial statements, because here there are 2 statements. One is income statement and second one is balance sheet. Now, at the end of the year, the profit which we arrived from profit and loss account or income statement is transferred to balance sheet. And we find out actual economic condition or financial condition of the business. Clear? That's why we prepare what? Balance sheet. Okay. Now, there are two important components of balance sheet. Now, what is balance sheet? So we have discussed why balance sheet is prepared: to know the economic condition or to know the financial condition of the business. Balance sheet is prepared at the end of the year. Now, what is balance sheet? So balance sheet includes 2 important components. Now, which are they? So first is capital and liabilities, and second one is what? Assets. So in balance sheet there are 2 sides. One side is known as capital and liabilities, and second side is known as assets. Now we know what is the meaning of capital, what is the meaning of liabilities, and what is the meaning of assets. हमको ये सबके मीनिंग पता है. एक कैपिटल किसको बोलते हैं, liabilities किसको बोलते हैं, and assets भी किसको बोलते हैं. So you have to remember how many components are there. So 2, which are they? Capital and liabilities, and second one is assets. Okay. Now next, the final effect of every business transaction goes to above mentioned 2 components of balance sheet. हम जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में करते हैं ना, उन सब की फाइनल इफेक्ट कहां पर जाती है? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में कहां पर? या तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज में जाएगा, या तो कहां पे जाएगा? असेट्स में जाएगा. क्लियर? सो ये कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे, लेकिन हियर you have to remember there are 2 important components of balance sheet, and they are first capital and liabilities, and second is assets. Now, capital and liabilities and assets, as per the norms of double entry system, the total of above mentioned 2 components remains identical. Now we are following which system? Double entry system. And as per double entry system,
both side, in a debit side and credit side, both side total are always equal. Equal means identical. So here also in balance sheet, capital and liabilities and assets, both total are always identical. Identical means equal, same. Now how? So according to the terminology of accounting, these two components are known as capital and liability side and asset side. So these are known as what? Capital and liability side and asset side. Okay. Now these can be represented in equation form as follow. हम इसको इक्वेशन फॉर्म में भी क्या करते हैं? लिख सकते हैं. How? So assets is equal to capital plus liabilities. In business, assets are always equal to its capital and its liabilities. Now this is what? This is accounting equation. This is what? Accounting equation. And in some countries, accounts are maintained on the base of accounting equation. इस accounting equation के ऊपर भी accounts हम directly लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं हम सब बाद में देखेंगे. But here you have to remember what is your accounting equation? Assets is equal to capital plus liabilities. In brief, इसको आप कैसे लिखते हो? A is equal to C plus L. क्या लिख सकते हैं हम? A is equal to C plus L. A stand for assets, C stand for capital, and L stand for liabilities. So कोई भी बिजनेस हो, you can take any business, कोई भी बिजनेस हो, उसकी जो assets है ना, वो always क्या होगी? उसकी capital and liability से equal होगी. कभी कोई ज्यादा या कम होगा नहीं. Both are always equal because we are following this system, double entry system, and under double entry system, the amount which is debited, same amount will be credited. जितना हम डेबिट करते हैं, उतना ही अमाउंट हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. वो हमने देख लिया है जर्नल एंट्रीज में. ओके. Now this is American. This is an American method for preparation of accounting transaction. तो कौन सी मेथड है? अमेरिकन. कौन सी? ये वाली. A is equal to C plus L. So आपको ऐसा क्वेश्चन है, which method is followed in American? So which method? American method for preparation of accounting. कौन सी है? A is equal to C plus L, or you can say accounting equation. And this is a modern approach. ये कौन सा है? This is a modern approach. ये modern approach है. तो what is traditional approach? अब मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट्स इस तरह से मेंटेन करते हैं. A is equal to C plus L. यानी here in this system of accounting there is no need to pass journal entries, there is no need to prepare ledger accounts, and there is no need to prepare trial balance. Directly effect of transaction is given directly according to this accounting equation. यहाँ पर इस accounting equation पे ट्रांजेक्शन को रेकॉर्ड करते हैं. यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते, लेजर अकाउंट्स नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते. डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या करते हैं? डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं. क्लियर? तो ये कौन सी मेथड है? अमेरिकन. लेकिन हम कौन सी फॉलो करते हैं? हम ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं. दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. हम कौन सी मेथड फॉलो करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड. एंड अंडर ट्रेडिशनल मेथड व्हाट वी आर डूइंग, दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. After that, whether it is a cash transaction or credit transaction. After that, how many accounts are associated with this transaction. Then, out of these two accounts, which accounts belongs to personal, real and nominal. And after that, on the base of rules of account, we prepare what? Journal entries. And after journal entries, we prepare ledger book. And after ledger book, we prepare trial balance. And after that, at the last, we prepare final accounts. In this, we prepare trading account, profit loss account, and balance sheet. So these are traditional approach जो हम follow करते हैं वो. But this what American approach, और इसके अंदर सिर्फ accounting equation के base पे accounts maintain होते हैं. इसमें ये लोग journal entry भी पास नहीं करते, ledger book भी नहीं बनाते, trial balance भी नहीं बनाते, और trading account, profit loss account बनाते नहीं. क्लियर? तो अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन ओनली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द बेस ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग इक्वेशन. और इसके इस मेथड के अंदर अकाउंट सिर्फ इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं. इसमें जर्नल एंट्री नहीं आती है, ना तो लेजर पोस्टिंग आती है, ना तो ट्रायल बैलेंस आता है. क्लियर? आपकी बुक में दिया है, देखो आपको क्या दिया है. अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल्स रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर यूज्ड. Under this traditional approach, on the basis of these rules, initially journal entries prepared, and finally final accounts are prepared, and at last balance sheet is
prepared. In accounting equation, effect of transaction is directly given in the balance sheet. यानी accounting equation वाले सिस्टम में हम ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, उसमें कुछ करते नहीं है. And this is what American method. Okay. Now this accounting equation, on the base of this accounting equation we have to prepare balance sheet. अब कैसे बैलेंस शीट बनाना है इसके एग्जांपल आपको आने वाले नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे इसके एग्जांपल भी देखेंगे कि हाउ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इज वर्क. ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे इक्वल होता है वो आपको मैं डायरेक्ट एग्जांपल देके समझाऊंगा. जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी इफेक्ट कैसी होगी, असेट्स में होगी या कैपिटल में होगी या लायबिलिटीज में होगी, कुछ भी इफेक्ट हो लेकिन इक्वल क्या क्या होगा, ऑलवेज इक्वल. अगर 10,000 ईयर है तो इन दोनों का मिला के कितना होगा 10,000 होगा. अगर यहाँ पे 70,000 है तो इन दोनों का टोटल मिला कितना होगा 70,000 होगा. कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है अगर, तो क्या होगा दोनों का टोटल ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसमें कभी चेंजेस आएगा नहीं. This is what accounting equation. Now we'll see accounting equation and its transaction. यानी accounting equation में कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं और उसकी इफेक्ट क्या होती है इस इक्वेशन के ऊपर, वो हम देखेंगे. ओके. Now here in accounting equation and transaction, so what kind of transaction take place? So here transactions are same. बाकी जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करो या मॉडर्न अप्रोच, ट्रांजेक्शन तो क्या होते हैं सेम होते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या है तो रिकॉर्ड, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है वो. सो हियर आल्सो देयर आर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स. नाउ यू मस्ट नो व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड विद गुड्स. सो परचेज, sales, purchase return, sales return, and goods goes from business other than sales and purchase return. तो ये सारे कौन से ट्रांजेक्शन है, तो ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स. और हमको पता है कि व्हाट वी हैव टू डू व्हेन परचेज इज देयर, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, व्हेन सेल्स इज देयर, सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने देखा है. बट हियर इन अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ डेबिट क्रेडिट होता नहीं है. Here there is no debit, no credit. यहाँ पे no rules of account. यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऐसा कुछ भी है नहीं. इसके अंदर सिर्फ हमें अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करनी है. वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन. बट हियर यू हैव टू रिमेंबर व्हिच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस अंडर दिस मेथड. Second, revenue and expense transaction. Now we know what is revenue and what is expense. Revenue means income. Then assets purchase and sales transaction. When we purchase and when we sell assets in business. Then transactions related to borrowing of funds and lending of funds. So in business sometimes we borrow fund when we need it, and then sometimes we also lend it when we have excess. है ना. So these types of transaction take place in business, in all business. Now from this accounting equation, how we have to record all these transactions in the books of account, that we have to see in this chapter. But remember, we have to not follow this method. We have to follow only what traditional method that we have seen. This is for your information. Okay. So in next lecture we'll discuss how transactions are recorded in accounting equation. Okay. Thank you and have a nice day.